This call is now being recorded. So this is what I was saying. So now, today's class will have two parts to it. One part will be the two-word concept that we follow, so that every day we all should keep on trying to learn two new words or the words that we have in the vocabulary, but we don't practice them. So keep finding those words. I mean, don't rush for finding new words. I would rather say the words that you already know, try using and practicing those words. So every day, pick up two words that you know or you don't know, find out the meaning of that, figure out how the sentences can be made. Google gives you everything. And once you have a sample sentence, then you try your own power of communication to make few sentences. Let's say the word is, let's say, temporary. अस्थायी इसको हिंदी में बोलते हैं. So you'll say, I don't like temporary things. Life is temporary. Beauty is temporary. Always focus on something which is not temporary in nature. Always look at what are the temporary things that will disappear after some time. So likewise, just keep on making small simple sentences with the words. Okay, so every day you'll keep on learning two words, and out of the 14 words that you learn in a week, in these classes you'll handpick any two words that you have learned or practiced in the previous week and share with all of us, saying that, "No, today I'm going to talk about these two words." So like we do in every class. If you guys have seen my video from other classes, we can follow the same pattern. Now the second thing in this group that we'll do is, because it's a smaller group, we'll do two things. One is the two words, and then second thing is we will pick up a topic and talk about it. So right now we are kind of moving towards making our communication more and more impactful and powerful. So we'll have to do some practice, but once we get used to English as a primary language after let's say a couple of months of effort, then the topics that we will decide will be at runtime. Like yesterday, I had given you guys a topic, right? That the flood situation in India and how it can be prevented in future, right? That was the topic. So you guys had 24 hours to prepare for that. I'm sure you would have thought through some of the ideas and that we'll talk about. But this kind of preparation time that we will get, let's say for next few months, till we are confident that okay, we can do it extempore as in run time, कि भाई आज जो है, आज आपका टॉपिक ये बोला, 2 मिनट में आइडिया जमा किया, पॉइंट्स सोचा, and then we just get going. Okay, so these two things that we will do for now, and we'll keep on making it more interesting. I have a lot of things that I keep on adding to my to classes. So we'll learn idioms and phrases. We'll learn we'll do some kind of antakshari. We'll do debate. We'll do even one act play also in future if we all start getting towards that. So to begin with, today's class will focus on these two things: two words and the topic that we have discussed yesterday. I have talked enough. I'll go on mute. Let's start with the two-word thing. Let's see who wants to go first. Anybody who is ready can raise their hand and get started. Hand as in this way, जो Google Meet में होता है ना? Okay, चलिए start कीजिए भाई. Archana ma'am. Yes, my two words is beside and beside. Means beside. Beside. Okay. Beside means in Hindi bagal mein. Okay. Yes, and the sentence is I would like sit beside her. Mm-hmm. The pen kept beside my friend. Mm-hmm. Okay. तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, ठीक है? पहला देखिए यूसेज के हिसाब से जाएंगे. The first sentence that you said was my two words is. तो वहां पे is नहीं होगा, it will always be are. Anything which is more than one, you have to use are purposefully. Don't rush. You'll say my two words are, and then you'll say the words. चलिए, ये एक पहला करेक्शन था. बाकी जो था आपने beside पे कहा, beside is fine. The first sentence you made is I want to be beside her. The pen was beside him. So the sentence was fine.
You can try few more sentences if you are comfortable, and then we'll go to the next word. मतलब दो सेंटेंस में मत रुकिए, 3-4 सेंटेंस तो झोंक दीजिए फटाफट. That is how you will get more Okay. comfortable. There is a beautiful school beside my house, Very nice. and sir, I'm I would always be beside you no matter what. My family will always be beside me in tough times. I always want to be beside my family when they need me. Right? एकदम एक yes, sir. सिखाते जाइए. Don't stop. मतलब I know it takes some effort. एक दो क्लास में थोड़ा मेहनत लगेगा, बाद में देखेंगे कि वो आएगा फटाफट. कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो कि 10-12 सेंटेंस के बाद रुकते हैं. So I want everybody to be like that. And my friend class is beside my class Very nice. क्लास या क्लासरूम जो भी. हाँ. classroom. Yep. Yes, sir. And the second word is beside, means alawa. Okay. How do you Ke spell? alawe. Besides. Besides. Iske Okay. alawa. Okay. Okay. Beside of this topic, I want to say about my country. Okay. Uh, I have lots of pen. Beside of this, I have 10 book also. Very nice. Uh, I like uh, I like lots of food, but beside of this, basically I want to eat Indian food. Mm-hmm. Okay. And sir, Right. actually, this is random. Right. This Right. नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं है. अभी see this class is just a reflection of how prepared we are. Okay. तो yes, sir. जैसे जैसे see इसलिए that is why I keep focusing on, I keep pushing everybody कि भाई आप डेली 2 वर्ड सीखो, उसको 5-6-10 सेंटेंस खुद से अकेले में बनाइए. Because here you are not getting time to prepare. When you are doing it by yourself, you'll get enough time and you'll prepare. है ना? तो वो Yes, sir. करके उसको मिरर के सामने किसी को घर में पकड़ के सुनाना है, कुछ तो करना है. मतलब when you do that, right, for a living, every day when you start doing it, that speed, the perfection, the confidence, the continuity will come naturally. So this Yes, is sir. first class. Whatever you're doing is more than expected from anybody. Okay, I don't think I have done this kind of a job when I had started my journey with English. तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है. You have made a good jump start, and that's why I would emphasize that all of us should keep learning, practicing 2 words and keep making sentences every day. किसी को पकड़ के जबरदस्ती सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल कीजिए, चलेगा. ठीक है. Yes, sir. There's one more thing that we do in the class. Okay, you would have seen in the videos that every word that we learn, the pronunciation is also very important. Very, very important. Because if Yes, you sir. don't pronounce it right, the meaning goes for a toss. तो अभी जैसे बिसाइड इज सिंपल. बिसाइड्स जो है उसको एक बार देखते हैं कि इसका कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है. तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान Okay. से. ये गूगल में मिलता है, आप सर्च करेंगे गूगल में जाके ना, मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखे, मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड लिखेंगे, तो इसमें एक माइक्रोफोन का सिंबल आता है. उस पर क्लिक करेंगे ना, उस वर्ड के बाजू Yes, में sir. Besides, बिसाइड्स. besides, Beside. besides, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जो हम लोग जो बोलते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, उसके पीछे हमारे मसल्स का खेल होता है. जो चेहरे में जितने मसल्स हैं, जाव का मसल, ये चीक का मसल, जो भी है, ऑल दीज मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक द साउंड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ. तो अंग्रेज लोग जो बोलता है उनका उच्चारण सुनिएगा और हमारा देसी लोग का उच्चारण होगा, उसमें अंतर होता है. बिकॉज देयर मसल्स आर ट्यून्ड. तो जैसे इसलिए प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, बिसाइड्स 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 बिसाइड्स, उस हिसाब से हम 4-5 बार उसको प्रोनाउंस करेंगे. आप भी जब नया वर्ड सीखेंगे डेली, तो उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश भी कीजिए. सेंटेंस बनाने से पहले उसको प्रोनाउंस कीजिए सही से. बिसाइड्स 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 बिसाइड्स. शर्माने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? मैं भी नहीं शर्मा रहा हूँ, आप भी मत शर्माइए. Besides, Yes, तो sir. ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो then your muscles will get adjusted
to pronounce it that way. Okay. Yeah. Yes, sir. So thank you, Archana ji, for the jump start for this group. You can put your hands down now, and let's see who wants to go next. Pinky ji or Anjali ji? Chaliye, Anjali ji, you can get started. Anjali ji, so your next thing is you're going to talk about the two words that you want to share with us. Yes, What is sir. the meaning of the word, and what are the sentences that you want to share? So, sir, my first word is information. Information means jankari. Mhm. And the first sentence about information word is before attending your class, uh, I get all information about you. Okay. Is it right, sir? So your sentence would be before attending the class, I got all the information about you, because that is something that has happened in the past. So you will Okay, I got. I got all the information about you. Or you can say I collected all the information about you. Either which way. Any which Hmm. way. Yeah. Go ahead. Yes, sir. Okay. Uh, if we start any business, so we collect all information about that particular business which we are going to start it. Which we are going to start. Hmm. Hmm. Very Um, nice. In the beginning, Anjali ji, you can try small sentences. मतलब 4-5 वर्ड का सेंटेंस निपटा दीजिए, ठीक है? जैसे जैसे okay, sir. गाड़ी आगे बढ़ेगी, सेंटेंस भी बड़ा Hmm. हो सकता है. चलिए, sorry for interrupting you. You can go ahead. अभी कुछ क्लू देता हूँ. Information is very important. We get information from everywhere. News is a good source of information. Book also provide you a lot of information. Family and friends collect a lot of information from each other. I go to school for collecting information about the exams. I don't like unwanted information. Information is sometimes good, sometimes bad. मतलब वही बोल रहा हूँ एकदम. बोले ना कि नेचुरली एकदम एक के बाद एक आलतू फालतू कुछ भी सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, sir. From news, we we know all type of information about the world. Hmm. Very nice. And, I like to gain information about Bollywood. Very nice. चलिए आज के लिए इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रोक देते हैं, लेकिन आगे जब आप अकेले में प्रैक्टिस किए, जो डेली 2 वर्ड सीखेंगे, उस समय में कोशिश कीजिए 5-7 से सेंटेंस पर रुकिए नहीं, ठीक है? छोटा सा सेंटेंस चलेगा. See, the thing is, people say that no, when you make big sentences with lot of word, that makes it impactful. Actually, that is a wrong understanding. If you make small sentences, cute sentences, that is actually a better way of communication. So always focus on making small sentences. That will add a lot of power to your communication actually, है ना? चलिए, ठीक है. दूसरा वर्ड आपको बताइए अंजलि जी. प्लीज गो अहेड. अंजलि जी आप म्यूट पे हो. Yes, sir, I'm audible. Yeah, I can hear you. Yeah. And my second word is communication. Very nice. Communication is good for beginners who learns English. Hmm. And my second sentence is communication makes man perfect. Mhm. Uh, through communication, we build our self confidence. We make ourselves confident, or we will We become make. confident. Hmm. Okay. Okay. Communication plays very important role in Our hello. day-to-day life. Okay. Hmm. Okay, sir. Very nice.
Sir, you make very easily, but I'm stuck in every sentence. अरे कोई नहीं, मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, 25 साल पुरानी जर्नी है मेरी, आप लोग आज शुरू कर रहे हो, तो टेंशन की बात नहीं है। See, when I was in engineering second year, that is when I started learning English or practicing English. Now मेरे को इंजीनियरिंग करके 23 साल हो गया, तो 25 साल हो गया ना, Yes, sir. तो टेंशन मत लीजिए उसके लिए। अभी 6 महीने में आपको मेरे लेवल में ले आएंगे, चिंता नहीं। Sir, I'm very happy to communicate with you, वेरी नाइस, but it is communicate, not communication. दैट इज स्टिल ओके। आई मीन सी, नाउन और वर्ड Okay. में थोड़ा सा हम लोग खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, करेक्ट? Okay. ठीक है, वेरी गुड स्टार्ट। सो अंजलि जी देखिए, आई मीन आई कैन टेल विद कॉन्फिडेंस दैट दिस ग्रुप इज way ahead of the level of students I have seen in my other classes and the level I have seen for myself. Okay. My first English sentence was, "My name is Birendra Kumar," and that took me a lot of effort and courage. आप लोग का तो बहुत आसानी से इंग्लिश आ रहा है, मेरा तो नहीं आता था। I had lot of struggle actually. So very good start, Anjali ji and Archana ji. चलिए पिंकी जी, over to you. Thank you so much, sir. No problem. Pinky ji, unmute yourself and share the word. Hello. Yeah. Hello. Sir, I have two words. Hmm. Kind. First is kind. Mhm. Sorry, admire. Admire. First word is admire. Mhm. I really like admire person. I'm very admire uh, Hmm. your teaching. ओके, तो हाँ, तो देखिए कहीं कहीं पे जो वेरी होता है ना, वो थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग को थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। तो यहाँ पे आप Okay. बोलेंगे, आप सिंपल बोलेंगे, आई I एडमायर। admire. हाँ, आई एडमायर योर टीचिंग स्टाइल, बस हो गया, उतने में हो जाएगा। Sir, what is the meaning of admire? एडमायर प्रशंसा मतलब करनी. को तारीफ करना या किसी को प्रेज करना, मतलब किसी का क्या बोलते हैं, हाँ, तारीफ करना, प्रशंसा. हाँ, प्रशंसा करना, हाँ वही वही। तो आई एडमायर मतलब एडमायर, अप्रिशिएट, आसपास का ही वर्ड है, कुल मिला के उसका मीनिंग वही होता है, प्रशंसा करना। ठीक Okay. है, हाँ, तो पिंकी जी कंटिन्यू कीजिए भाई। Okay. I admire my son's study. ओके, I admire when my son speak with me in English. ओके, आई एडमायर व्हेन माय सन स्पीक्स विथ मी इन इंग्लिश। Okay, I admire when my sons speak with me in English. वेरी नाइस। तो देखिए एक और ट्रिक है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग जानते होंगे, राइट? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे, एक एक चीज बोलते थे, फिर रुक जाते थे, 3-4 सेकंड का पॉज, फिर दूसरा वर्ड, फिर 3-4 सेकंड का पॉज, फिर तीसरा वर्ड। Yes, yes, yes. तो उसमें क्या होता था ना, उनको सोचने का बहुत टाइम मिल जाता था। इसका ये मतलब नहीं था उनका उनका कमजोर था कम्युनिकेशन, दैट वाज हिज स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। सो द राइट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हेन यू हैव इनफ पॉज इन बिटवीन वर्ड्स। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, इफ आई एम कीपिंग सम गैप इन बिटवीन माय टू वर्ड्स, इट गिव्स यू मोर चांस टू कॉम्प्रिहेंड एंड डाइजेस्ट व्हाट आई एम सेइंग। तो आप भी जैसे आपने दूसरी बार कोशिश किया, यू वेंट लिटिल स्लो, you were able to confidently say what you were saying. तो आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि when you are talking, try to talk little slowly, purposefully. आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलिए पिंकी जी कंटिन्यू कीजिए। आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस आपने बनाया वो अच्छा बना था, मतलब when you went slow, you were able to correct lot of things at one time. Okay. हाँ, तो एडमायर का दो सेंटेंस आपने सुनाया, एक दो और सुनाइए थोड़ा कोशिश करके। Okay. I admire when Narendra Modi speak in front of public.
हाँ, तो वहां पे देखिए दो चीज है एक्चुअली। एडमायर और अप्रिशिएट का अंतर यहाँ पे आ जाता है। एडमायर मतलब आप किसी का मतलब किसी का पूजा करने से एक लेवल नीचे, मतलब नहीं था। आई, जैसे बोलते ना, आई आई लाइक यू और आई अप्रिशिएट यू और आई एडमायर यू। तो एडमायर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिगार्ड फॉर समबडी। ओके, यू। Okay. तो जैसे आई एडमायर पीपल विथ वेरी काइंड हार्ट, तो वहां पे एक्चुअली आपको मतलब उसकी पूजा अर्चना करने से जस्ट नीचे तक जो है उसको आप तारीफ करते हैं बेसिकली। बहुत हाई Okay. रिस्पेक्ट है। तो आप बोलेंगे आई रेस्पेक्ट नरेंद्र मोदी फॉर द वर्क ही डज। आई एडमायर Respect. पीपल Okay. who have very good intention toward the society, तो वहां पे एडमायर करते हैं। अब मान लीजिए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो यू विल प्रॉब्ली चूज टू से आई लाइक योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, बट एडमायर थोड़ा ज्यादा भाव हो जाता है, उतना ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं टीचर को। Okay. Okay. ठीक है, तो वैसे मतलब Okay. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैट, है ना। हाँ, Okay. Okay, sir. आप जैसे बोलेंगे आई एडमायर माई पेरेंट्स फॉर द सेक्रीफाइस दे हैव डन, तो वो एडमायर एक्चुअली उसका वेट है वहां पे, समझ। We can say, sir, I admire my mother. She is very hardworking. ऑफ कोर्स, बिल्कुल उससे ज्यादा पक्का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। Okay. तो यहाँ पे क्या होता है उसमें जो है ना, एडमायर में एक और चीज है, थोड़ा सा अगर स्मार्टली यूज करेंगे इसको तो आपको यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू विल से आई एडमायर माय मदर फॉर हर हार्ड वर्किंग नेचर, और आई एडमायर माय For her hardworking. For नेचर, her hardworking नेचर नेचर, nature. हाँ, Okay. Okay. और आई एडमायर माय मदर फॉर द हार्ड वर्क, उतना में ही काम हो जाएगा आपका। Okay. I admire my mother hard worker. I admire my मदर, mother. I admire my mother's hard work, या I admire my mother for hard work, है ना। वो Okay. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया खुद से आ जाएगा एक्चुअली, है ना। Okay. Okay, sir. Okay. और सुनाइए, पहला वर्ड तो हो गया, और दूसरा वर्ड सुनाइए। And second word is, sir, at that time his word is not remember right now. हाँ, नहीं तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे कि आप जो डेली दो वर्ड सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, आई वुड सजेस्ट कि कोई जो स्टिकी नोट्स जैसा कुछ होता है ना जो आप लोग किचन में रखते होंगे, फ्रिज में चिपका के रखते हैं कुछ भी, उसमें वो वर्ड्स लिख लिया कीजिए, जहाँ पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं पे लिख लिया कीजिए। तो वो वर्ड्स आप लिखा हुआ रहेगा, आपने डेली प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तो वो स्टिकी नोट से आपको याद हो जाएगा एक्चुअली, नहीं तो है कि भाई सब्जी बन रही है तभी वो वर्ड देख लिया एक बार, Okay. तो उससे see ultimately it will benefit all of us if we make it part of our routine। मैं Okay. मैं अपनी नौकरी में के क्रम में जितना अंग्रेजी नहीं सीखा हूँ, आई एम लर्निंग इट मोर फ्रॉम माय किड्स एक्चुअली। अब मेरे बच्चे जैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उनका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है, and there's a lot of things which I don't know, I have not come across that in my life, so when they say Okay. something, I ask them, okay, what is the meaning of this, tell me how do you use that in a sentence, how do you pronounce it। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको बेसिकली आई हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। मैं अपनी वाइफ से सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ, बच्चों से अंग्रेजी होता है, तो उसमें मेरा प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है। Okay. Okay, sir. ठीक है, तो वही आप वो सब फॉर्मूला लगाइएगा, जैसे नहीं तो जो वर्ड्स आप डिलीट कर रहे हैं ना उसको कहीं पे आप स्टिकी नोट में रख लीजिए, किचन में या कहीं पे जहाँ पे आपके गैस स्टोव के पास में कहीं पे चिपका लीजिए उसको, ठीक है, ताकि नजर तो पड़ ही जाएगी, नजर पड़ जाएगी तो याद भी आ जाएगा। Okay. ठीक है, And sir, my second word is worried. वरीड, वेरी नाइस। Yeah. I am very worried about what they said yesterday. ओके, I was worried. I am very worried about my future. ओके, वेरी नाइस। I'm worried about my kids' health. I'm worried about my kids' studies. I'm worried about your well-being. I'm worried about। Excuse me, sir. हाँ, बोलिए।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे कि अभी पिंकी मैम ने कहा, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फ्यूचर, सो हम्म। अबाउट इज द करेक्ट प्रपोजिशन देयर, यस। और फॉर नहीं, माई फ्यूचर? वरीड अबाउट, यहाँ पे एक्चुअली बेस्ट पार्ट क्या है ना, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फ्यूचर और फॉर माई फ्यूचर। एक्चुअली फॉर आप यूज करते हो व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ पर्सन। आई एम वेरी वरीड ओके, फॉर यू, आई एम वेरी वरीड अबाउट, मतलब आप किस, जब व्हेन इट्स अ लिविंग थिंग, then for becomes more appropriate. But even if you use for or no about interchangeably, otherwise also मतलब communication को ज्यादा hurt नहीं करता है वो। ठीक है, आप जैसे ओके, आप दो सेंटेंस सुनना, आई एम वेरी वरीड फॉर माई फ्यूचर, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फ्यूचर। कोई दुनिया का कोई अंग्रेज इसमें अंतर नहीं निकाल पाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो और कम्युनिकेशन में इट इज मोर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्टनेस ऑफ द सेंटेंस, rather than the grammar part of it. थोड़ा ग्रामर का टॉलरेंस रहता है, मतलब if you are only focusing on communication skills, थोड़ा सा टॉलरेंस रहेगा as long as you are pronouncing things right and the message is going effectively to the person who is hearing it. ठीक है, ओके सॉरी पिंकी जी, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अंजलि जी, आई होप आई ओके, आंसर्ड क्वेश्चन। यस सर। ओके। I was very, I was worried. I was worried about. बोलिए। Sir, I am very confused. तो Very, sorry, about and for हाँ, and about. आप नहीं, पहले तो कंफ्यूजन को निकाल दीजिए मन से। गलती ही होगा ना, होने दीजिए, कोई बात Mhm. नहीं, गलती होने दीजिए, प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, कोई नहीं। देखिए अभी जैसे आपने दो सेंटेंस बोला, आई एम वेरी Hmm. वरीड बिकॉज, फिर आप रुक गए, बोले आप आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, तो आप दोनों Hmm. सेंटेंस मिला दिया, आई एम वरीड बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड। Okay. ठीक है, Okay. तो सी यू कैन हैव एनी रीजन फॉर बीइंग वरीड, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। Hmm. एक मिनट, यू विल से आई एम वेरी वरीड, आई डोंट नो व्हाई, Hmm. मतलब Okay. मुझे पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ। Okay. आई एम वेरी वरीड, मे बी बिकॉज आई एम थिंकिंग, आई एम वेरी वरीड बिकॉज आई एम ओवर थिंकिंग। तो इसलिए जो जो पॉज रखेंगे वर्ड के बीच में ना, वो आपको आइडिया Hmm. देगा, प्रैक्टिस से आएगा, बट देगा वो आइडिया। ठीक है, Okay. ओके, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको पॉज करते हैं, ये दो वर्ड वाला गेम को यहाँ पे रोक देते हैं। आप लोगों ने जो टॉपिक था उस पर जो प्रिपेयर किया था सुनाइए, 5-6 सेंटेंस सुनाइए। आई नो यू वुड हैव कम प्रिपेयर्ड। आई विल नॉट इंटरप्ट यू इन बिटवीन सेंटेंसेस, आई लेट यू कंप्लीट फर्स्ट। और आप लोग सबको ध्यान दीजिए, जब दूसरा बोल रहा होगा उसमें कहीं पे लगे कुछ है करेक्शन का अपॉर्चुनिटी, तो बताइएगा, हम भी अब नोट कर रहे होंगे। तो चलिए, जो भी शुरू करना चाहे, अर्चना जी, अंजलि जी या प्रिंकी जी, जो भी शुरू करना चाहे हाथ उठाइए, शुरू कीजिए। ओके, हाँ Shall जी I जी, start now? या प्लीज। So, first of all, thank you so much for giving me a chance say, uh, to share my views about flood. So, I want to begin my like, बोलिए, मैं अगर सीरियस दिख रहा हूँ तो मैं सीरियस नहीं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, गलती हो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। okay. So, first of all, we have to know what is flood. Flood is a natural disaster. Is a type of natural disaster which which human being as well as living creatures faces, I think, in every year हम्म, all over the world.
Okay, so flood is a overflow of water that submerges a dry land, and this is often caused by heavy rainfall and snow melt, Mhm. and deforestation also is a important point, is an important cause of flood. Hmm. And um, what to say? Nowadays that India is suffering from flood disaster because some part of states is overflow. Some part of state is overflow with a heavy rainfall, or that changes into flood, Hmm. in which human beings as well as living creatures suffers a lot. And today when I read a news, so I saw that Delhi government marks a level in Yamuna River and that level was crossed by 204.55 meter. That is an high alert that is a high alert uh, around the अराउंड नहीं क्या बोलेंगे सर अराउंड होगा कि सराउंड होगा सराउंडिंग सराउंडिंग बोल मतलब ओके देखिए, if you're talking about a place which is surrounded by something, मतलब या और around मतलब उसके आसपास. ओके Hmm. सो हाँ तो दिल्ली गवर्नमेंट Hmm. सॉरी सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो आप लोग कोशिश करने के लिए धक्का मारे हैं और कुछ नहीं. Yes. So Delhi government makes an high alert surrounding the areas of Yamuna River, and they provide some government scheme helps to survive their life nowadays. Uh, Hmm. and ओके, तो देखिए यहाँ पे रुक जाते हैं अंजलि जी, ठीक है. अभी yes, जैसे क्या करेंगे कि अभी जो हम आगे से जो भी टॉपिक हम लोग चूज करेंगे, आप देखिए आपका सेंटेंसेस फ्रेम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है. आप सेंटेंसेस फ्रेम कर पाते हो, यू आर एबल टू सिलेक्ट द वर्ड्स. थोड़ी बहुत गलतियां इधर उधर मिलेंगी, दैट इज ओके. आई मीन दैट इज पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व. ओके, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, आपका वोकेबुलरी ठीक ठाक है, आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन ठीक ठाक है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्चुअली whichever topic you want to talk about, since we are getting time in advance and we are still in the process of practicing English more, what you can do is just write a few lines about it. बोलते हैं ना, पुराने जमाने में बोलते थे कि अगर कोई चीज लिख लिया तो हम भूलते नहीं है. तो yes, ma'am. अगले क्लास में जब हम एक दिन पहले जैसे मान लीजिए हम बता देंगे भाई ये टॉपिक है आपका, तो आप 5-6 सेंटेंसेस, कोई जरूरी नहीं कि हम 20 सेंटेंस बोले, 5 सेंटेंसेस लिख लीजिए, लिख के उसको पढ़ लीजिए, और चाहे तो क्लास में बोल के मतलब पढ़ के ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. क्या होगा ना, 2-3 क्लास में आपको वो करना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा कि आप देन यू विल स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स कि ओके, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक, दी आर द 3 थिंग्स दैट आई विल हैव इन माय टॉपिक. फर्स्ट थिंग इज एन ओवरव्यू ऑफ इट, सेकंड थिंग इज द आउटकम, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट वी कैन डू फॉर प्रिवेंटिंग इट, और व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम द होल थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है, मतलब हर एक डिस्कशन का लास्ट में एक होता है कंक्लूजन. पहला आप सामने बताते हैं कि भाई मेरा समझ मतलब व्हाट इज दैट आई अंडरस्टैंड, मेरा ये समझदारी है. व्हाट इज दैट आई इंटरप्रेट, कि भाई उस जो बताया मैंने उसका इंटरप्रिटेशन क्या, उससे क्या उसको कैसे समझ सकते हैं. एंड थर्ड इज जहां पर आप कंक्लूड करते हैं कि अच्छा भाई जितना भी मैंने बताया उसका मीनिंग ये है. ठीक है, तो हर एक टॉपिक का वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है. तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जो है जब भी टॉपिक मिले, कोशिश कीजिए कि 5 लाइन 7 लाइन 10 लाइन लिख लीजिए. उसको शुरू में 1-2 क्लास में बोल के सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बाद में चाहे तो याद करके सुना दे, वो भी चलेगा. और उसके बाद देखिएगा 4th 5th 6th क्लास के बाद में इट विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली. ठीक है, बट Okay, sir. वेरी गुड स्टार्ट अंजलि जी. आई मीन डर को अगर मार दिया
तो लाइफ में तकलीफ लगती। ओके, चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? अर्चना जी, पिंकी जी। हाँ अर्चना जी, चलिए स्टार्ट कीजिए भाई। Good morning, sir. Thank you for giving me a chance to say something about flood. Sir, after Pinky, then I will say actually that is an important call. Okay. Sorry. Okay, no problem. Pinky ji, you can go ahead. Okay, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak in front of you. Today I'm going to share about flood. Mhm. Uh, flood is the one flood is one of the natural Hmm. natural Disaster, disasters disasters डिजास्टर बोलते हैं। okay disasters okay डिजास्टर। natural disasters and most risky. ओके। It happened when too much water is collected in any area, and it happens because because of heavy rain and the overflow of the river causing the this natural disaster डिजास्टर। disaster देखिए, disaster डिजास्टर, डी di डी और ja सास, इसने सास, आपकी सास, ठीक है। डिसास्टर, डिजास्टर, तो सास को थोड़ा सा मतलब नहीं था उसका। disasters डिजास्टर, disasters हाँ। disasters तो okay disasters सास के बदले जास हो गया तो डिजास्टर, ठीक है। disasters हाँ, okay disasters is in rural areas रू, तो रूरल नहीं बोलेंगे, रूरल बोलेंगे। रूरल होता है। rural rural area जी। okay rural areas हम्म। moreover the melting of snow also across मेल्टिंग। Melting. हम्म। melting हाँ। okay ओके, तो देखिए अभी जैसे आप लोग ने जो पहले क्लास में इतना शुरुआत किया था, दैट इज नॉट लेस बाय एनी मीन्स, ठीक है। इतना इतना कुछ हम अगर पहले दिन में बोल लिए होते तो हम तो मतलब अपने आप को राजा महाराजा समझ लिए होते। तो आप लोगों ने अच्छी शुरुआत की है। गुड थिंग हियर इज यू ऑल हैव नो गुड वोकेबुलरी। एक्चुअली आप लोग के पास वर्ड्स बहुत सारे हैं। What we will learn gradually is how to stitch those words together to make meaningful and impactful sentences, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जैसे फ्लड के बारे में अगर मुझे बोलना होता तो व्हाट आई विल डू। ओके, मैं शायद 5 मिनट में 10 मिनट प्रिपेयर करना होगा। तो पहले मेरा होगा कि भाई मैं 2 लाइन बोलूंगा, फ्लड है क्या, उसके बाद फ्लड से होता क्या है, और तीसरा है कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ये तीन मेरे दिमाग में एक फ्लो रहेगा कि भाई हाँ, पहले मेरे को बताना है कि फ्लड के बारे में, फ्लड होता क्या है, उससे क्या चीज है फ्लड, सेकंड कि उससे क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है, और तीसरा है कि इसको से बचना कैसे है। पिंकी जी भी चली गई, तो कोई नहीं, अभी जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको इसको ऑडियो को बाद में आप लोग देख लीजिएगा, तो मतलब जो भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो थोड़ा रिकैप हो जाएगा सबका। आप पिंकी जी और अर्चना जी को भी बोल दीजिए, मतलब ये वीडियो थोड़ा देख लेने के लिए 15-20 मिनट लगेगा देखने के लिए। हाँ, तो वंस आई हैव दैट स्ट्रक्चर इन माइंड, राइट, कि हाँ व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, उसका क्या क्या फाइंडिंग है, और उसको कैसे बचाना है, then this is how I will go. I'll not say a lot of sentences, but this is how my flow will go. That flood is a natural phenomenon of lot of water getting deposited in one place or flowing through a place where it is uncontrolled. And when flood happens, it moves everything along with it. The big stream of water flushes everything that comes its way. So this is flood. Now
Flood can be very damaging. It creates a lot of impact to people because that stream of water that flows through the roads, the farms, the houses, it takes or carries everything along with it, and hence causes a lot of impact to the lives, uh, or the, animals, plants, everything that comes its way. You will see floods also damage the bridges, the houses that come, or the plants and trees that comes its way. So the damage caused by flood is not something that can be repaired very quickly. Any place that gets affected by flood, it takes a lot of time for complete recovery, and involves a lot of money. So governments should always look at ways to barricade the dams, make sure that the water flows through the right channel. It doesn't spread all over. It doesn't, impact the people. And then on the top of that, there should always be a notice. There should be a, alert that should be issued to people who can get affected by flood, so that they can go to safe places before the flood happens. That is the only way we can look at how we can minimize the impact of flood and save some lives. So I hope flood doesn't happen that often, though it is a natural phenomenon, but most of it is caused by us only, by human beings, by cutting trees, by cutting plants, by constructing houses near the jungles, by living in low rise areas where the risk of water flowing through it is more. So it is us humans who have created these problems. So it is our responsibility to see how we can do the course correction and avoid these things from happening in future. Thank you. So again, मेरे दिमाग में वही तीन तीन स्ट्रक्चर था, ठीक है. बाकी सेंटेंसेस मैं अपने समझ के हिसाब से बनाते जा रहा था रन टाइम पे. तो आप जब भी किसी टॉपिक के बारे में करें तो पहले आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर रखना है कि भाई पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है. तो वो फ्लो आपके दिमाग में रहेगा ना, देन यू विल कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली, और you'll be able to make sure that there's a flow to the way you are speaking, है ना. अब मेरा परफॉर्मेंस कैसा था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू नो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर थिंग्स, है ना, फॉर टॉपिक. ठीक है, कोई सवाल? नो सर. ओके, ठीक है. तो चलिए अभी जो है, अभी हम लोग फिर अगले वेंसडे को मिलेंगे फिर, ठीक है, 9:30 एज वी एग्रीड. ठीक है. तो अभी से लेके वेंसडे के बीच में क्या क्या करना है, आप लोग डेली 2 वर्ड सीखेंगे स्टिकी नोट्स में, जहाँ जिस जगह पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे रखिए, ताकि नजर पड़ते रहे, प्रैक्टिस होता रहे. ठीक है. और आप लोग तीनों आपस में, या आपके और भी जो सहेलियां हैं, या आपके फैमिली के लोग जिनके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो, उनके साथ में कोई एक विंडो फिक्स कर लीजिए कि जब दोपहर में 2 से 3 या 3 से 4, जो भी टाइम, कि भाई इस टाइम पे जो बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे. टूटा फूटा हो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को सिखाएंगे तो चलता है, बट फिक्स अप टाइम. और इसलिए बोलो 1 घंटा, क्योंकि अगर बोलो कि हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपसे बात करना बंद कर देगा, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर प्राइमरी लैंग्वेज, राइट. तो किसी को आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते. आप सिर्फ एक डिसिप्लिन ला सकते हो कि भाई 1 घंटा जो है हमारा कॉन्शियस एफर्ट रहेगा बात करने के लिए, ताकि हम लोग सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहेंगे. शुरू में हो सकता है 1 घंटा, उस 1 घंटे के ऐसा नहीं कि वो 1 घंटा बात करेंगे ही, उस 1 घंटे के बीच में जितना भी बात करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे. शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, इंग्लिश के बाद देखेंगे थोड़ी आदत पड़ जाएगी, तो देन दैट विल स्टार्ट बेनिफिटिंग. तो अभी वही रहेगा, डेली एक विंडो फिक्स करके, चाहे आप लोग आपस में बात कर लीजिए या फिर घर में किसी से बात कीजिए. या एक और उपाय है कि मुझे छोटा छोटा ऑडियो बना करके ग्रुप में डाल सकते हैं कि भाई किसी से बात करने को नहीं मिला तो आप रैंडम किया, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फैमिली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय यंगर सन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट what नेताजी हैज डन इन आवर विलेज. कुछ भी, जो भी आपको पसंद का हो. I watched a movie Pathan. Let me talk about my experience with that movie. ठीक है. कुछ समझ में नहीं आया तो आज बॉलीवुड का ये स्टार को पसंद नहीं है, उसके बारे में बोलेंगे. अगले दिन जो है कोई पसंद है उसके बारे में बोलेंगे. ठीक है. तो मतलब बेसिकली टॉपिक्स वैसा सोचिए जो आपके पसंद का, जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि जिस चीज में आपको मजा आता हो उसके बारे में बोलेंगे तो ज्यादा बोल पाएंगे, तो आपको आइडियाज भी आएंगे. ठीक है.
तो वैसा वो करते रहिए। डेली 1 घंटा आपका वीडियो देख लीजिए, चाहे बात कीजिए किसी आपस में, घर परिवार में, या फिर एक ऑडियो बना के ग्रुप में डाल सकते हैं। और डेली 2 वर्ड सीखते रहिए। और अगले क्लास जो वेडनेसडे को होगा उसके एक दिन पहले मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, या फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टॉपिक ये है, और उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए जैसा कि बोला था, जैसे हमने बात किया। और उसके बाद फिर हम लोग आकर के फिर अगले वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले एक काम ये बोलूँगा कि जो इसका जो वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब में, आई होप आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा। तो वो ये वीडियो जाके पूरा देख लीजिए, मतलब 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो होगा, अगर तो 25-30 मिनट नहीं देखिए, 15-20 मिनट तो देख लीजिएगा, एटलीस्ट कुछ चीजें तो याद आएंगी, है ना। Yes, sir. तो बस यही करें, फिर देखते हैं कितना फायदा होता है। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, है ना। ऑल Okay, राइट, sir. चलिए, हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे। मेरा भी गुड नाइट हो गया, मैं चला सोने। Okay, sir. Good Okay, night. sir. बाय बाय बाय। Thank you so much, sir. नो Thank you, sir. प्रॉब्लम, बाय बाय।